Palolem, one of the most beautiful landscape in South Goa. It has everything to offer: backwater, beaches, mountains, islands, everything. You can spend amazing time here. And from this place, also there are multiple options to visit Butterfly Island, Honeymoon Beach, Monkey Island. The journey is really awesome. A different kind of experience you will get. And this beach is not crowded at all. So spending a wonderful time is assured. This is also a place for family because you won't find that party wala crowd here. You just go to a corner, sit at one of the rock, watch the waves, and I'm pretty sure it will give you a peace of mind. Guess what? We have planned to stay here for 3 days. We are really excited. Hope you guys are as well. We checked into another hotel, Oyo Property. Again, we got a very good deal. For 2 days, AC room 2700 rupees, which is really great. और वो प्रॉपर्टी हमने छोड़ दिया क्योंकि उधर पार्किंग नहीं था ढंग से और उसके चक्कर में ना एक कांड भी हो गया. मतलब हम रात को पार्क किए थे, कोई पूरा चारों टायर का हवा निकाल दिया. सुबह देखा तो मतलब कोई ऑप्शन भी नहीं है चेंज करने के लिए क्योंकि संडे है और कल होली. सारे दुकान बंद था. मतलब हाफ डे उसमें ही चला गया. उसके बाद हम मारुति रोड साइड असिस्टेंस को कॉल किया. वो लोगों ने उनका गाड़ी लेके आए, सब टूल्स वूल्स लेके आए, चारों टायर निकाला, उसके बाद लेके गए, हवा भर के फिर से लेके आए. तो वो सारे चीज़ के चक्कर में ना हाफ डे उधर ही चला गया हमारा. एनीवे, जो होना है वो तो होगा ही, उसका कुछ कर नहीं सकते. अभी हम रेडी होके निकल रहे हैं अगोंडा बीच जाने के लिए. अगोंडा बीच में नहीं जाएंगे. उसके आसपास एक रॉक फॉर्मेशन करके एक जगह है जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है सैटेलाइट व्यू से. तो उधर हम जाएंगे. ओके, चलो निकलते हैं. If you have planned to stay in South Goa, I think Palolem Beach is the best because from Palolem Beach, right, you can visit most of the other beaches. Few forts are there also. Complete scenic locations. And South Goa is completely kind of less explored. Yeah, nowadays it is full popular, but still it is not crowded like the Panjim side, Madgaon side of it, right? So those side is too crowded because all the party crowd, right, generally they prefer to go there. And South Goa is kind of full of scenic beauty, and people who love nature, definitely they will love South Goa. आयुष्मान का एग्जाम खत्म हो गया, उसका नेक्स्ट डे ही हम निकल गए गोवा के लिए. हाँ, और आयुष्मान हैज ए कंडीशन टिल 9 days, राइट? नोबडी शुड आस्क 9-10 days, nobody should ask to study. Yeah, he need full freedom, it seems. Only 10 days. After that, Yeah, only 10 days, Ajman. After that, you need to study at least for an hour or two daily. लास्ट टाइम भी मैं आया था 4 years बैक, राइट? मैं साउथ गोवा में ही रुका था. मतलब साउथ गोवा में ज़्यादा प्लेस एक्सप्लोर किया था क्योंकि नॉर्थ गोवा एक तो आपको पूरा नॉर्थ गोवा अच्छा लगेगा, नहीं तो साउथ गोवा. लेकिन आपको पार्टी वाला माहौल चाहिए तो द प्रॉपर गोवा, कालिंगड, बागा, वो साइड अच्छा रहता है. लास्ट टाइम हम कालिंगड बीच गए थे, उधर तो गाड़ी पार्क करने को भी नहीं हुआ.
इतना भीड़ था, और हमको तो भीड़ पसंद नहीं है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं साउथ गोवा। साउथ गोवा तो वंडरफुल वंडरफुल। Man, this is Oxford, man. Turn right. What turn right? Let's see where the road goes. Piggy, piggy, pig. There is no road only. Let's see. The place is very nice. Way to beach restaurant. I think we came to the right place. Yeah, wow. Okay, let's park and go. अगोंडा बीच तो काफ़ी फेमस है, लेकिन ये रॉक फॉर्मेशन वाला जो एरिया है ये इतना पॉपुलर है नहीं, और कोई डायरेक्शन कोई रूट मैप था नहीं। लेकिन आप गूगल मैप में रॉक फॉर्मेशन करके सर्च कीजिए, आपको ये जगह मिल जाएगा। ये जगह काफ़ी बेहतर है अगोंडा बीच से। बीच तो सारे बीच एक ही जैसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ रॉक फॉर्मेशन टाइप कुछ डिफरेंट रहेगा ना तो मज़ा आ जाता है। इट्स रियली लुक्स ब्यूटीफुल। सी हियर। It's a wonderful place, man. Really very beautiful. Not much crowded as well. Climate is also very good. Actually, we spent the afternoon at hotel only because the climate is too humid here, and only you can just roam in the morning and evening. See, such a beautiful place. Slow, slippery, huh? मेरा बस चले ना इधर कैंप लगा के रात को रुक जाऊँ, इतना अच्छा लगता है ये जगह, छोड़ के जाने को मन ही नहीं कर रहा है। पूरा रॉक्स, और काफ़ी इजीली आप क्लाइंब कर सकते हो, कुछ डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आयुष्मान, दैट एरिया इज स्लिपरी, ओके। Now check this out, a drone shot of this place. It will really look amazing for sure. Check this out.
बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन. सच्चे ऑसम लोकेशन. मस्त शॉट्स भी लिए, आपने देखा रहेगा ड्रोन शॉट. नाउ टाइम टू गो बैक टू होटल. वी विल One more thing you need to experience in Goa is having a candlelight dinner. Definitely it's a unique experience. तो हम ओवडा बीच से सीधा डायरेक्टली इधर आ गए. पालोलम बीच में एक शैक है, इधर हम बैठ के कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं. लास्ट टाइम भी हम आए थे इधर. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है. तो यू शुड नॉट मिस इफ़ यू आर इन गोवा, राइट? एटलीस्ट वंस यू शुड कम हियर एनी ऑफ द बीच शैक. यू कैन हैव ए कैंडल लाइट डिनर. And after having the dinner we will go, we'll call it a day, and we'll meet tomorrow again. So let's have our dinner virtually. You guys also enjoy with us. We are back to the room. This is the benefit of staying close to beach. Most of the time we can spend at beach, and just before going to bed you can come to the room. And उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा रहेगा आज का वीडियो. कल हमारा प्लान है टू विजिट बटरफ्लाई बीच और एक दो सीनिक लोकेशन है नियर बाय, and I will keep you posted. See you in the next vlog. Till then, take care. Bye bye. पहुंच गए जन्नत पे 2 किलोमीटर ट्रैक के बाद.